Assalamu alaikum to all the students. Welcome to you all in our English literature class. As we have already done so many things in language, and I don't think so there is anything left related to a language topic. If you want me to tell you anything about in the language topic, so you can tell me right now, or we should start the literature one. If you people have anything in your mind, so you can ask me. You can raise the hand if you want to tell anything. Yes, Muhammad Ali, you want to ask something? Miss, I have please explain transitive and intransitive. थोड़ा सा loudly बोलेंगे, I can't hear you. Transitive intransitive समझा दें Transitive and एक बार। intransitive, it is not included in the syllabus क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ cut short किया है syllabus. So types of verbs they are not included in that. Okay? मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, but this is not coming in your paper because we have cut short the syllabus according to the we can't make everything questions in the Google form. ठीक है, बहुत सारी चीजें limitations ऐसी हैं, we cannot do that. So that's why I have given you forms of verb जो आपको learning करनी है, present, past and past participle, ठीक है? But transitive and intransitive they are not included. अच्छा, transitive and intransitive के लिए I have अच्छा रमला, you want to ask something? Yes. यस मिस, मुझे आपसे पूछना था कि फॉर्म्स कब अपलोड होंगे और ईच फॉर्म कितने मार्क्स का, कितने मिनट का होगा, वो सब आप बता रही हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पता चल जाएगा? मैं सब बताती हूँ आपको, वेट, जस्ट वेट. ओके यस शेरोज, मैं ये कह रहा था कि मैं अगर आप आईडी एक ओवरव्यू दे दें मिस कंडीशन सेंटेंस का जो कि प्रीवियस क्लास में आपने बताया किसका था ओवरव्यू थोड़ा सा लाउडली बोलिए. मिस कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशनल सेंटेंसेस का. ओके फाइन, ठीक है. और हु इज दैट फाइज? फाइज, कैन यू प्लीज रीनेम योर आईडी? यस शेरोज, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ मिस ओवरव्यू और कंडीशन सेंटेंस में मिल जाए तो कंडीशनल का. यस, आई रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू टू मेक सम उर्दू सेंटेंसेस ऑफ कंडीशनल्स. मुझे याद है कि मैंने आपको होमवर्क कहा था कि 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच कंडीशनल टाइप आप उसको नोट डाउन करके लेकर आएंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दैट. वैसे मैंने फॉर द सेफ साइड लिटरेचर के कुछ आरटीसीज निकाल लिए थे. ओके, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. देन वी विल कम टू द पॉइंट व्हाट यू वर आस्किंग. अच्छा, हु इज फाइज? Faiz, who are you? And kindly rename your ID. Otherwise, I'll not mark your attendance. Yes. Hello. Ji. It is class 4G. No, it's not class 4. It's class 7. Oh, okay. Sorry. Okay. Thank you so much. Acha ji. And Sharoz, kindly put your hand down. Okay. If you don't have any other question, then you can put down the hand. Acha. Who was asking to me about the forms? ठीक है, आपके forms जिस तरह mock you have already done. Okay, everything will be same. I have uploaded, I have posted the starting and giving time, means the time breakup of the whole paper. ठीक है, मैंने वो आपको पोस्ट कर दिया है. You can see there in the Google Classroom. I think सबसे टॉप वाली जो अनाउंसमेंट है उसमें आपके पास ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी. There is the paper over here. ठीक है, which paper you are having on which date. ठीक है, और आपका डे क्या है, whatever is written over there. फॉर्मेट में आपको क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग टाइम ऑफ द पेपर which will be start at 8:30 AM. Okay, and it will end, means we have broken up according to the forms. कि how many forms we have, total number of forms they are 6. ठीक है. And अच्छा, one thing more I can do here कि मैं आपको अगर शेयर कर दूं, how can I share? अच्छा, just a minute. मैं अगर आप लोगों के साथ, this is the class 4, I think मैं आप लोगों के साथ 7th क्लास को अगर शेयर कर लूं तो it will be convenient for you all. ठीक है, फिर हम कंडीशनल को भी डिस्कस कर लेंगे. This is class 7. ठीक है, and this is the breakup of time. ठीक है, ये आपके लैंग्वेज पेपर का ब्रेकअप है. It's on June 8. ठीक है, and this is I think Tuesday है. Okay, total number of forms in language paper you have 5.
Clear? Can you all see that? Is it visible to you all? अब सबके लिए visible होगा ये. You can give me reply in the chat box. Okay, I have opened the chat. I have make it visible for you and make it writable for you. Yes, thank you, Namna. Now you can see over here that you have English language paper on 8 June. Okay, total number of forms you have 5. You have to attempt 5 number of forms. ठीक है, 5 forms आपने fill up करने हैं. Nobody will ask me कि miss how many forms we have. There is everything written in the instruction. अगर आप instructions को 5 minutes लगाकर अगर आप read out कर लेंगे तो it will be very convenient for you. Instructions का time, everything time is given to you to do in that form. ठीक है, अगर आपका first form is of 40 minutes, ठीक है, अगर वो आपका 40 से 45 मिनट्स का है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस के मैंने 5 पॉइंट्स या 5 मिनट्स डाले हैं. Okay, so you should not be worried about कि 40 minutes में maybe I would do that or the paper will be left. No, आपका पेपर किसी तरह रहेगा ही नहीं. Okay, it is very convenient for you. Just suppose you have form 1, start time is 8:30. Okay, end time is 9:15. You have 45 minutes for form 1. Okay, so you have to complete those all 20, 25, 30, whatever is the questions, whatever is the number of questions given to you, ये आपके 45 minutes में easily हो जाएंगे. Okay, I have given you plenty of time. Clear? Then after 5 minutes means 9:15 पे आपका time खत्म होगा. Maybe you have done 8:30 से आप 45 पर ही complete कर लें उसको 8:45 पे, so you will be free. Clear? But the second form will be uploaded, will be posted there at 9:20 because it is already scheduled. It is already scheduled. It is already assigned timings. ओके, वो अपने टाइम पर ही अपलोड होगा. मे बी 2-3 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है. मे बी 8:30 के बजाय वो 8:34 पे अपलोड हो. ठीक है, इट मे बी बिकॉज ऑफ नेट इशू. किसी के पास जल्दी अपलोड हो जाएगा, किसी के पास देर से विजिबल होगा. आप लोगों को पहले नजर आ जाता है, मुझे 4 मिनट बाद नजर आता है. क्लियर? तो समटाइम्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. इट डजंट मैटर. Clear? Then 5 minutes के gap से you will be having 5 minutes gap in first and second form, second and third form, third से fourth form में आपको हर form से दूसरे form में आने के लिए आपको 5 minutes का gap बीच में given होगा. Then again 9:20 पे second form start होगा. Timing of second form, okay, it will be 9:20. अगर ये वाला आपका 8:34 पे अपलोड हो रहा है तो obviously 9:24 पर ही next वाला अपलोड होगा. क्लियर? 9:23, 9:24 पे जितना टाइम ये वाला अपलोड लेट डिले लेगा उतना ही ये भी लेगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द नेट, ठीक है, कोई भी फ्लक्चुएशन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा स्लो है, कहीं फास्ट है, देन अदरवाइज इट विल बी अपलोडेड ऑन द टाइम. क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज द टोटल फॉर्मेट. यस ज़ुहैब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? वैसे मैंने पूछना था कि ऐसे और लेटर आपने सिलेबस में दिया हुआ तो वो किस तरीके से आएगा? नो, ऐसे लेटर या आपके जो सेल्फ राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, आई हैवंट गिवन यू. ओके, इट टेक्स टाइम. वो आपको सोचकर लिखने में टाइम बहुत कंज्यूम करता है. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट गिवन यू एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन. आपका पूरे फॉर्म टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है. ओके, सो दिस इज द होल फॉर्मेट और ब्रेकअप ऑफ द टाइम. ओके, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ऑन योर गूगल क्लासरूम. एंड दिस इज ऑफ 100 मार्क्स पेपर. ठीक है, इसकी मार्किंग इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है. क्लियर? अच्छा, Subhana, it is just like what you have already done in the quizzes और dictations में जैसे आप करते थे, आपने सबमिट किया. You can view your score also. Okay, कोई भी चीज आपसे छुपी भी नहीं है. Whatever you will do, it will be just seen by you. ठीक है, जैसे आप करते आए हैं वैसे ही होगा. Ramla, you can see the question when you will open the form. ठीक है, because I don't have any only one class. मेरे पास 3 या 4 classes हैं. I don't remember कि किसको मैंने कितना टाइम दिया है, कितने टाइम के लिए how many questions I have given to you. Okay, when your form will be open to you, it will be very clearly in the instructions everything is written. कि आपके कितने questions हैं, कितना टाइम उसके लिए given है और what is the topic. Okay, language में I have gathered 2-3 topics. ठीक है, समटाइम्स जो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक जैसे जीरंड्स हैं विद दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिमिलीज हैं, इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्म बना दिया है. ठीक है, तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस, 10, 20, 30 भी हो सकते हैं. आई रियली डोंट रिमेंबर कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3. मुझे नहीं याद बिकॉज आई मेड लैंग्वेज लिटरेचर देन अदर क्लासेस आल्सो, so I don't remember how many questions are there. It will be very easily visible for you. Every paper is of 100 marks.
लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, ठीक है। अच्छा, नाउ इज इट क्लियर, इज इट एनीथिंग लेफ्ट रिलेटेड टू द पेपर, फाइनल पेपर? प्लीज काइंडली मुझे कोई भी क्लासरूम में ये कमेंट ना करे कि मिस नेक्स्ट फॉर्म कब अपलोड होगा, नेक्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आ रहा। ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट इट टेक्स टाइम टू अपीयर ऑन द क्लासरूम। आपको कभी जल्दी अपीयर हो जाता है, मेरे पास थोड़ा सा लेट अपीयर होता है। यस शेरोज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जस्ट अ सेकंड। यस, यू कैन टेल मी इन द माइक। यस, इसमें ये पूछा मैं सामने एक मॉक में अपना एक कॉम्प्रिहेंशन दिए दो, एक ही फॉर्म, तो उसमें फाइनल टर्म में भी इसी तरह होगा? यस इसी तरह होगा। कॉम्प्रिहेंशन ओके, ये भी 2 दे दूं, मैं भी 1 दे दूं, मैं भी कोई भी ना दूं, ठीक है। यस मोहम्मद अली, do you have any question? Please, if you have asked the question, just put your hand down. Yes mohammed ali, do you have anything to ask? लैंग्वेज का 100 मार्क्स है, लिटरेचर का भी 100 का है। Yes, yes, both of them are of 100 marks, ठीक है। ओके मिस। Okay, put your hand down Zuhaib, Shehroz, if you don't have any question, put your hand down, okay। अच्छा, now I have already told you everything about that, ठीक है। अच्छा, now who was अच्छा, Shehroz was asking me about the conditional sentences। सानिया, ऑब्वियसली आपके सारे पेपर 8:30 पे ही स्टार्ट होंगे, बट देयर टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म्स दे आर डिफरेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वर्ड्स मीनिंग है तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए आपको 1 घंटा तो नहीं दूंगी ना। अगर मैंने 10 वर्ड्स मीनिंग दी है तो मैं आपको 20 मिनट्स दूंगी, ओके, मे बी 25 मिनट्स आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। इट कैन बी डिफर, it can differ, everything will be posted on the Google Classroom। आपको 1-2 दिन पहले सब चीजें पोस्ट होकर मिल जाएंगी, don't worry about that, okay। we all know better than you कि what thing can create problem for you, आपके लिए क्या चीज confusion create कर सकती है वो हम आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो we will इंशाल्लाह upload 1 or 2 days before everything, ठीक है, वो आपको सब पता चल जाएगा। okay, now I am going to open again the conditional sentences, okay। we have conditional sentences, yes, (25) okay, yes, first of all we should move to, can you see, everybody can see the screen, is it okay? This is conditional number 1, sorry 0, okay, thank you so much। this is conditional 1, acha, how many of you have made some sentences of conditional 0? sorry, this is the first conditional and this is conditional 0, ठीक है। 4 types of conditionals we have, this is conditional number 0 which is based on the natural facts, okay, universal truths पे based करता है, and its structure is if plus present simple comma present simple। how many of you have made sentences, Urdu sentences for the translation, okay, I'm asking about Urdu sentences for the translation, किस किसने बनाए हैं, they can raise the hand, I'll ask them and they can tell me what is the confusion behind that, or if they want me to translate it into Urdu or English, so they can tell me। yes, Sheroz, have you made any Urdu sentence of 0 conditional? it was your homework actually, okay। if you people haven't made any point or any sentence, then we can go through with that quickly and come to the point, the lecture I have made for you। yes Sheroz, Sheroz, do you have any sentence? yes yes yes, for conditional 0? yes ma'am। yes, if you, अगर तुम ज्यादा टीवी देखते हो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, हो जाती है। हाँ, so this was my sentence, ये तो मैंने बनाया था, है ना। yes yes हाँ, you can also do that, अगर तुम ज्यादा टीवी देखते हो
तो आंखें खराब हो जाती हैं। व्हाट इज द कंफ्यूजन बिहाइंड दैट? मुझे ये तो बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। टेंस के बारे में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई थी कि कौन सा मिस टेंस के कंडीशन बारे है। में यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया इन कंडीशनल जीरो वी हैव इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ठीक है, इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर? इफ क्लॉज प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल विच इज V1। ओके, करते हो, आते हो, जाते हो, भीगते हो या खाते हो, पीते हो, whatever, then we have to put comma because the if clause is at the first part of the sentence, तो हमें बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए we have to put comma here। ठीक है, और अगर हम if clause को बाद में पुट करते हैं तो we don't need to put comma। ठीक है, उसको फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती because if is in the between of two sentences। then again we have present simple, means ये वो sentences होते हैं which are based on the real facts। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको definition दिखाऊं, as this type refers neither to the future nor to the past, the simple present tense is used। okay, and we have this type of sentences, it does not matter which of the two clauses begin the complex। okay, see, in general we use conditional sentences for ideal situation depends on another, accordingly they are linked to a condition in which four types of conditional sentences are differentiated depending probability or possibility। if something is always true under certain circumstances, the zero condition sentence, or if clause type zero is utilized in particular, ठीक है, means if you have something which is always true, ठीक है, means खाना खाते हो तो पेट भर जाता है, ठीक है, खाना नहीं खाते हो तो भूखे रह जाते हो। दिस इज द कॉमन सेंस, और यू कैन से दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अगर तुम पानी पीते हो तो प्यास बुझती है। ठीक है, अगर तुम मींस तुम नहाते हो तो साफ सुथरे हो जाते हो। ठीक है, ये वो वाले सेंटेंसेस हैं इन विच ऑल द कंडीशंस आर रियल एंड देयर इज 100% चांसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशन की चांस नहीं होते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नो, तुम ये करते हो तो ऐसा होता है, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वो पिघल जाती है। दिस इज द रियल फैक्ट। ठीक है, ये वो सेंटेंसेस हैं जो रियल फैक्ट्स पे बेस करते हैं। देयर इज नथिंग टू बी डाउटफुल अबाउट। ठीक है, इसमें वो कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। इफ यू प्रेस द बटन द फ्यूज ब्लोज। ठीक है, द फ्यूज ब्लोज इफ यू प्रेस दैट बटन, मींस अगर तुम स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, ऑन हो जाती है। अगर तुम पंखे में बैठते हो तो तुम गर्मी फील नहीं करते हो। क्लियर? दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर द रियल फैक्ट सेंटेंसेस एंड देयर इज नथिंग टू बी डाउटेड ऑन। क्लियर? शेरोज, और कोई प्रॉब्लम है? बेटे नेशनल फैक्ट्स नहीं, नेचुरल फैक्ट्स। ओके, दिस इज नेचुरल फैक्ट्स। ठीक है, ये नेशनल फैक्ट्स नहीं है, नेचुरल फैक्ट्स हैं, मींस यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, रियल फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हमें कोई शक हो। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंडीशनल जीरो। और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। एनीबडी हैज गॉट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, ही और शी कैन टेल मी। जुहेब, यस, मुझे लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज, आप फॉर्म पे दोबारा मत जाइएगा। यस जुहेब। Zuhaib, do you want to ask something? Kindly unmute the mic so that you can tell me. Okay, I'm not wasting my time. Okay, now we should come to the literature one. Okay. Yes, I have made some RTCs. Okay, okay, Zuhaib. Okay, fine. ठीक है, मैंने कुछ RTCs I have taken out from the book, जो मैंने आपकी लिटरेचर की बुक में से निकाली हैं। ठीक है, we should now come to the revised lecture of novel David Copperfield. I have all together, I have taken all 6 chapters or 6 lessons you can say which are coming in the final term. Okay, number 1 RTC is, are you wondering why the candle is there? Yes, who will tell me the name of the lesson? Just raise the hand, I'll ask the question and then reply me. ठीक है, yes, who is going to tell me the name of the lesson from where I have taken this dialogue? Yes, Yaroz.
Are you wondering why the candle is there? Miss Emily leaves home chapter. This is Emily from leaves home. Emily's leave home. Okay, who is telling these words? Miss Pagoti, Mr. Pagoti. Mr. Pegotti is telling to Miss everyone who was there in his house. no, not everyone. Actually, it is to David. Okay, because David was looking at him when he went over there. He was looking at Mr. Pegotti that he is lighting up the candle and he is putting it by the window. So then he asked, "Are you wondering why the candle is there?" Then, acha, why was the candle there? Yes, Afra, can you give me the reply of that question? Why was the candle there? Afra, can you please unmute the mic so that you can tell me the answer? Or anybody else? Anybody else who want to give me the answer of this question? Why was the candle there? No one? Yes, Muhammad Ali. Only Muhammad Ali and Shehroz घूम फिर कर यही दो बच्चे पकड़े जाते हैं मुझसे. Yes. Because Mr. Peggotty was finding Emily. मोहम्मद अली थोड़ा सा loudly बोलिए please. Yes. Mr. Peggotty was finding Emily. When Peggotty was? When Mr. Peggotty was finding Emily. No, And he had to. Muhammad Ali. No. Shehroz, yes. Can you? Because so that Emily could find her home, find the way of her home easily. Yes, when he replied to the question of David that why was the candle there, because he wanted to get Emily know about that someone is waiting inside the house for her. Okay, कि जब वो देखेगी कैंडल विंडो में कैंडल जलती हुई तो उसको ये फील होगा, अच्छा लगेगा that Mr. Peggotty is there in the house and he is waiting for Emily. Okay, मोहम्मद अली? Yes, miss. आप गलत आंसर कर रहे थे ना? ओके, चलें, कम टू द नेक्स्ट वन. ठीक है. Oh no, I hope she will see how useful I am to her father. Yes. Now Muhammad Ali will give me the reply of this all the questions. Yes, Muhammad Ali, name the lesson first. What is the name of the lesson? Can you repeat? हाँ? Can you repeat again? मोहम्मद अली थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज. आई एम शाउटिंग हियर. पता है मैं बाकायदा शाउट कर रही हूँ इधर. देन यू कैन हियर मी. आप भी थोड़ा सा लाउडली बोलिए सो दैट आई कैन हियर यू. यस. Can you repeat again? मुझे अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही. Miss, please repeat again. थोड़ा सा क्लियर बोलिए ना. आई कांट हियर यू. मुझे लेसन का नेम तो बताइए. मैं कह रहा हूँ एक बार वो आर्टिकल दोबारा रिपीट कर लें. कैन यू सी द स्क्रीन? अच्छा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही. सो यू पीपल आर नॉट टेलिंग मी दैट यू कैन नॉट सी द स्क्रीन. आप मुझे ये बता ही नहीं रहे कि आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है. Miss, conditional sentences. अच्छा, जस्ट अ सेकंड मैं इसको दोबारा शो करती हूँ. ठीक है. तो डबल शेयरिंग में आई थिंक कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है. आप क्लियर है? Yes. हाँ. Oh no, I hope she will see how useful I am to her father. First, tell me the name of the lesson. From which lesson I have taken these words? My love for Dora. My love for Dora. Acha, who said these words to whom? Uriah Heep to David. Huh? Uriah Heep to David. Uriah Heep to David. And who is the father here? Mr. Huh? Wickfield. Mr. Wickfield. Mr. Wickfield is the father of Agnes. We are talking about her. अच्छा, what is the useful according to the parts of speech? क्या है ये? Adverb है, adjective है. What is this? Useful. Adjective है because we are talking about the person. Okay, and it is the quality of a person to be useful. Very good. Yeah. Okay, then come to the next one. Yes. Okay. Come to the next one. Number 3. Acha, it was a long way for him.
he had nothing to delight him on the journey. Yes. From which lesson I have taken this? Can anybody give me the reply in the chat box? Who cannot give me the reply in the mic? अगर आपको mic available नहीं है और you don't want to give me reply in the mic, so you can give me in the chat box. Okay? Sharos, just a second. Let other people also to have chance to reply. ठीक है? Yes, Sania. Can you give me the reply in the chat box that from which lesson I have taken this line? Sanya, can you give me the reply? Or should I unmute you? Yes, Sanya. Can you tell me? If you people will not participate, then I can't make this lecture interesting one और उसको फिर हम successfully कर ही नहीं पाएंगे. Yes, Sanya. Give me the lesson name first. What is the lesson name? It was a long journey for him. He had nothing to delight him on the journey. No, Sania, no. Emily's return. Julia's crime में तो हम we have done about the Emily is coming home back and the Julia's crimes were uncovered. हमने तो सिर्फ Emily reaches home में oh sorry Emily's returns Julia's crime में तो हमने सिर्फ यही चीजें पढ़ी हैं कि how Emily came back to home, okay, and what were the crimes of Julia. Dora and I are married. No, no. Anybody else? Anybody else who can give me the correct lesson name? I want correct lesson name. My love for Dora. Very good. Yes. अच्छा. And who said these words to whom? अब ये तो कोई बता दे मुझे except Sheroz. Sheroz के अलावा कोई मुझे बताए कि who said these words to whom? Yes, Muhammad Ali, can you give me the reply of who said these words to whom? Muhammad Ali, where have you gone? Yes, David said these words to Dora. David said? David said these words to Dora. No, Dora said these words to David. Achha, we should Okay, see miss. the book. Okay. This is page number 57. Okay. See. I hope your poor horse was not tired when he got home last night, said Dora. She looked at me with her beautiful eyes. It was a long way for him. It was a long way for him. I agreed. He had nothing to delight him on the journey. Yes, I agreed means David is saying these words to Dora. Very good. Very good. Acha. Why it was a long way? Yes. Who can tell me why it was a long way? What is the you can say what is the venue? Yes, Sharoz. Why it was a long way? You miss miss for that purpose is the horse head. And what is the place they reach? On a hill. Sorry? The picnic spot. Miss on a hill, the picnic spot. It was a picnic spot, or you can say it, and Dora's birthday was celebrated over there. And what is meant by he? यहाँ he से क्या मतलब है? Horse, David's horse, on which he rode. Horse on which David rode and he reached over there. Very good. Yes, miss. Yes. Now come to the next one. I only came to ask whether there was anything he could do in the present situation. Yes.
Hania, Fahim, you should reply me whether in the chat box or in the mic. You can reply me in this question. Number 4. I only came to ask whether there was anything we could do in the present situation. Who is going to tell these things? Name the lesson. Leave that question. Name the lesson. Who said to whom? किसने कहे थे और किसको कहे थे? Yes, Hania. Hania or Sania, you can give me the reply because you have attended all the lectures about these. Ramla, where are you? You can also give me the reply. No, I'm not asking about the lesson name. ठीक है, मैं lesson name तो नहीं पूछ रही. I want the name of the speaker. Yes, Ramla, who is the speaker of this line? मुझे speaker का नाम बताइए. And who were we? We से क्या मुराद है? We में कौन कौन शामिल है? And what is the present situation according to this line? What does it mean by the present situation? ऐसी क्या situation है? Give me the complete answer. One by one, एक एक करके ही दीजिए एक एक word में. But give me the complete answer. No, Hania, no. Mr. Mikover, how can he help for anybody? वो तो बेचारा खुद help का मोहताज है. Julia, Mrs. Heath. This is not Sharoz. Miss Heath nahi, Mrs. Heath. Okay. And Mr. Whitfield. Very good. He has given me the name of the people. Okay. We में कौन कौन शामिल है? Sharoz has given me the names of all those people. Who said these words? कहे किसने थे? He is not Mr. Mikober. Or what is the present situation? Give me the reply of that question also. Yes. Mr. Pegotti? No. No. Mohammad Ali, you are not reading the novel. ये आप लोग फिजिकल से जो वापस घर पे बैठे हैं ना, because of online, you people are not reading again and again the lessons. नहीं read करेंगे देखें तो it will be harmful for you. Mrs. Betsy home was ruined. Yes, this is the present situation that Auntie Betsy was ruined. All her property and money was stolen. This is the present situation. And who is the speaker? मुझे speaker का नाम तो बताए कोई. Yes, Sharoz. If you have got that point, आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो let me know the speaker's name. Julia to David. Very good. Julia was asking when Auntie Betsy was annoyed by his twisting habit. तो फिर Julia ने क्या कहा था? I only came to ask when he said that Auntie Betsy is a very nice lady, but she's a short-tempered. We only came here to ask whether there was anything we could do in the present situation. क्या हम उनके लिए कोई help कर सकते हैं और नहीं? This was the situation. Okay, you people, if you are not taking part in the reading habit, you are not increasing your reading habit of novel, तो आप सब भूल जाएंगे और फिर आपके पेपर में जो है ना बहुत सारी गड़बड़ होगी, ये बता रही हूँ. अच्छा, now come to number 5. No, I do not defend my actions. ये तो बहुत ही easy है. The name of the lesson is very easy. The speaker name is very easy. Yes, and what was the action here? Action तो बहुत easy है. I want somebody else except Sharoz. Sharoz तो पूरी situation बता देंगे मुझे. I know he is very much interested in this novel. I know he reads a lot. मुझे idea है. But I want from the others also. कि दूसरे भी तो पढ़ रहे हो, मुझे कुछ पता तो चले कि how other people, how other class students, how they are taking part in this all. Yes, Hania, Sania, Afra, Asia, you are not active today. We have only 5 minutes left. Halima, where are you? These are the students who usually participate in the classroom, but today and in these 2 weeks, they are totally absent. Their names are present over here, but they are not mentally present here. Sumaya, where are you? You are not replying for anything. ऐसा तो नहीं है कि सब एक्टिव होकर फिर जाके सो जाते हैं क्लासरूम को ज्वाइन करके. Yes, Sharoz, nobody is replying me. अच्छा, आप ही बता दीजिए भाई. Yes. Yes, Emily written chapter. Emily written, we get time. Very good.
And who said these words? Miss Emily to Miss Dartle. Miss Rosa Dartle. Emily to Miss Rosa Rosa Dartle. Dartle. Very good. And what was the action here? Miss Emily or Rosa Dartle? What was the action? Which action she is talking about here? Okay, Arina, I do not defend my actions. So what is the action here? What was the action, Sharoz? Miss Emily has run away with Steerforth. Okay, so this Yes, was yes. the bad action which she has done, and Rosa Dartle came here to scold her. And at that time, she said that no, I do not defend my actions. I know, and Steerforth also knows that he has used all his power to trick me, and he trapped me in his means कि उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, and something happened like that. Okay, so this was Okay, the miss. action. These types of question can come. ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आर्टिस्ट में आते रहे हैं और आ सकते हैं. ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी एक्टिव अबाउट द होल सिचुएशन अबाउट द डायलॉग. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन. आई वाज वेरी वेरी हैप्पी बट दिस इज द बेस्ट एंड. यस, हु सेड दीज वर्ड्स? Yes, Muhammad Ali, you gave me the right answer. That the action is she ran away with Steerforth. Yes, Emily said to Miss Dartle, Rida Rahim, you are so late. हम तो कर भी चुके वो सारा कुछ. Okay, yes, give me the reply of number 6. We have 2 minutes left. Give me the reply of number 6. I was very very happy, but this is the best end. Who said these words? No, Hania, not David. David ने नहीं कहे थे ये words. Yes, Heroes. Do you have any idea? Agnes to David, no. Muhammad Ali, no. Agnes का end कहाँ हुआ? Why is she talking about the end? Miss Dora to David. Miss Dora to David. Said these words to David. no, David, no. To Agnes when she met with her in the private room. Okay, तब वो उससे कहती है कि I was very very happy कि मैं after marriage I was very very happy. I had had a very nice time with David. Okay, but this is the best end. Yes, Muhammad Ali. Muhammad Ali, do you have anything to say? थोड़ा सा loudly बोलिएगा please. I had to give the answer who said to whom. हाँ दीजिए. When Dora said to Agent Shadows. हाँ, and what is the end? The last question, which is what is the end she is talking about? Dora has died. Dora has died. तो फिर वो बात कैसे कर रही है? Dora is about to die. Okay, she is on the deathbed and she is about to die. So she called Agnes to come to me so that she can talk her privately. And what did she ask to her? She asked her to get married with David after her death. Okay, so this was the today's lecture. And after that, I came to know that you people are not reading the novel again and again. उसको read नहीं कर रहे हैं. Kindly उसको अच्छी तरह से read कीजिएगा before the paper. Clear? So we should leave now. Inshallah, we will be having time with each other between the paper. Okay? Thanks all of you. Take care of yourself. Allah Hafiz.